গুৱাহাটী মহানগৰীত উৰণ সেতুৰ খুঁটাত অঁকা সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবি মচি পেলালে কোনে? সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকনক লৈ আৰম্ভ হোৱা বিতৰ্কই নতুন মূৰ লৈছে। বশিষ্ঠ চাৰিআলিস্থিত উৰণ সেতুখনৰ খুঁটাত অংকন কৰা বিজ্ঞানী, পৰিৱেশকৰ্মী তথা সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুকৰ ছবিখন অজ্ঞাত লোকে গভীৰ নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ মচি পেলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু কোনে আৰু কিয় এই ছবিখন মচি পেলালে সেয়া লৈ বিভিন্ন মহলত আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। দুদিন পূৰ্বে কেইজনমান যুৱকে বশিষ্ঠৰ উৰণ সেতুৰ এটা খুঁটাত সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত ছবি অংকন কৰাৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ দুজন ছাত্ৰ ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়ৰ নকুল মিলি আৰু দক্ষিণ গাঁৱৰ গৌৰৱ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ দাবীত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত অন্বেষণ কৰা সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই তেওঁলোকে জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহলৈ যোৱা পথৰ দেৱালত প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি থকা অৱস্থাতেই আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আটক কৰিছিল। ইফালে এতিয়া উৰণ সেতুৰ খুঁটাত অংকন কৰা প্ৰতিচ্ছবিখনো মচি পেলোৱাত ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ সচেতন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সামাজিক মাধ্যমতো এই ঘটনাক লৈ বিভিন্নজনে কৰিছে বিভিন্ন মতামত। উল্লেখ্য যে নিট ইউজি 2026-ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন বিসংগতিৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত অন্বেষণত বহে সোনম ৱাংচুক। প্ৰায় 20 দিন ধৰি অন্বেষণ কৰাৰ পাছত শনিবাৰে পুৱা আৰক্ষীয়ে ৱাংচুকক যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। ৱাংচুকৰ এই প্ৰতিবাদৰ সৈতে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰো সংযোগ আছে। দলটোৰ নেতৃত্বই ৱাংচুকক এই অন্বেষণৰ বাবে আগুৱাই দিয়া বুলি চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে। সোনম ৱাংচুকৰ প্ৰতিবাদক লৈ বিভিন্নজনে সমৰ্থন জনালেও একাংশই সমালোচনা কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিৰুদ্বেগ ভূমিকাকো সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নজনে। সোনম ৱাংচুকৰ চলি থকা প্ৰতিবাদ আৰু অন্বেষণক কেন্দ্ৰ কৰি আজি নতুনকৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। 20 দিনতকৈ অধিক সময় ধৰি অন্বেষণ কৰি থকা ৱাংচুকক দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ স্বাৰ্থত স্থানান্তৰ কৰি ছফদৰজং চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ আশংকাত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। চিকিৎসালয়ত থকাৰ মাজতেই ৱাংচুকে এটা বাৰ্তা প্ৰকাশ কৰি চলো সংসদ কাৰ্যসূচীত শান্তিপূৰ্ণভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সমৰ্থকসকলক আহ্বান জনাইছে। তেওঁ ভয়ৰ পৰা স্বাধীনতা আৰু অন্যায়ৰ পৰা স্বাধীনতাৰ আহ্বান জনাই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব বুলি সদৰি কৰিছে। ইফালে ৱাংচুকৰ সহকৰ্মীসকলে তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসালয়ত ৰখা উচিত নহয় বুলি দাবী কৰি তেওঁক পুনৰ যন্তৰ মন্তৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁলোকৰ মতে আন্দোলন আগন্তুক দিনত বিস্তৃত ৰূপত কৰা হ'ব আৰু 20 জুলাইৰ সংসদ অভিমুখে পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী বাহাল থাকিব। অসমতো পৰিছে এই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ। বৰ্তমান চিকিৎসকসকলৰ মতে সোনম ৱাংচুক শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল যদিও তেওঁৰ অৱস্থা স্থিৰ। অৱশ্যে দীঘলীয়া অন্বেষণৰ বাবে তেওঁৰ স্বাস্থ্য নিবিড়ভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে। সোনম ৱাংচুকে বৰ্তমান কৰাৰ প্ৰতিবাদৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। তেওঁ অন্বেষণত বহি মূলতঃ এই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ অনিয়মৰ নৈতিক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী, পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতা, ভৱিষ্যতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, দুৰ্নীতি আৰু পৰীক্ষাৰ অনিয়ম ৰোধ কৰিবলৈ কঠোৰ সংস্কাৰ, যুৱ সমাজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা, লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত যাতে অনিয়মৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় সেই উদ্দেশ্যেই তেওঁ অব্যাহত ৰাখিছে আন্দোলন। শেহতীয়াকৈ তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছত চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে। তথাপিও সমৰ্থকসকলক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু চলো সংসদ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে সোনম ৱাংচুকে অতীতত লাডাখৰ বাবে 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা, ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দাবীত আন্দোলন কৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমানৰ এই অন্বেষণ আৰু প্ৰতিবাদ মূলতঃ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ আৰু পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰিত। वो कह रहे हैं कि उनके हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा
और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा। क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशियरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है, और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी, तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे? सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी। मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी। तो कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया, है ना? ये दूसरी बात है। तो इसलिए ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहाँ से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ अंदर खड़ी रहती है। तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है बिना, और हम जब कहते हैं पुलिस को कि जैसे मेरा फ़ोन नहीं ले जाने देते, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी उनको, उनका सैमसंग की, ताकि वो लिख पढ़ सके, वो नहीं देने दिया। और जब हम पूछते हैं कि आपके पास कहाँ ऑर्डर्स हैं, हमें दिखाइए, किस ऑर्डर के बेसिस पे आप ये सब चेकअप कर रहे हो, तो उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर्स भी नहीं है। तो ये एक अनसेड इलीगल डिटेंशन के जैसे इसको ये किया जा रहा है। और ये बहुत ही बुरा टाइम देश के लिए चल रहा है, जब एक इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में, जहां उसको अच्छा लगे, जहां वो खुश हो, वहां नहीं वो ट्रीटमेंट ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कहां करना है। और ये कहते हुए कि उनकी हेल्थ ये है, लेकिन उनकी हेल्थ की उनको कोई चिंता नहीं है, जो उनके एक्शन से हमें दिखाई देता है। और ये भी कहा गया मैम कि मेदांता या फिर कोई भी निजी अस्पताल के डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर से, अगर आपको कोई भी वो नहीं अलाउ कर रहे कि हमारे डॉक्टर्स उनको कंसल्ट कर सके, लेकिन हमने उनको ऑफर किया कि हम मेदांता में आपके और डॉक्टर्स को कंसल्ट करने देना चाहेंगे। যদি আপুনি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেনেহ'লে এনেধৰণৰ খবৰৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। কমেণ্টত জনাওক আপোনাৰ মতামত, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন খবৰৰ সৈতে।